A very good morning to all the students. So students, we have completed 2 chapters in geography. In second chapter we have learned endogenetic movement. Okay, so we have seen how the endogenetic movement has been formed. What is endogenetic movement? Hope you have all understood the second chapter. So today we are moving on with our third chapter, that is exogenetic movement. So exogenetic movement, what is exogenetic movement? What are the different types, how it is formed, we are going to learn in this chapter. Okay, so now what is exogenetic movement? So एक्सोजेनेटिक जैसे एंडोजेनेटिक था इंटरनल मूवमेंट. ओके, जो मूवमेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस पे होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोजेनेटिक. ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सोजेनेटिक. एक्सोजेनेटिक मतलब उसका ऑपोजिट. ओके, जो एक्सटर्नल पार्ट या फिर सरफेस, ओके, सरफेस पे या सरफेस के ऊपर जो भी मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सोजेनेटिक मूवमेंट. So we are going to study the exogenetic movement, which is the external part movement of the earth. So let us start the today's lesson. This lesson also we are going to learn part by part. So exogenetic process part 1. This is your third chapter of geography of standard 9th. Exogenetic process part 1. So व्हाट इज एक्सोजेनेटिक? जैसे मैंने बताया था, अर्थ के सरफेस या अर्थ के नियर पे जो भी प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस. Many landforms are formed due to the internal movement. Many processes occurring on the Earth's surface also lead to the formation or degradation of landforms continuously. In this lesson, we will be studying the exogenetic external process and the landform formed by them. So, in this lesson, we are going to study the external. Okay, what all process is going on externally by the Earth. ओके, अर्थ के जो भी एक्सटर्नल प्रोसेस क्या क्या हो रहा है, हाउ द लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. मूविंग ऑन. External process occur because of the force working on the earth's surface. So external process how it has been formed by the force working on the earth's surface. Earth के surface पे जब force आता है तो this external process has been formed. They are mainly solar energy, gravitational force and the kinetic energy. So why this external process occur? External processes occur because force is applied in the surface, which all force is applied such as कौन से force applied होते हैं? Solar energy, gravitational force and kinetic energy. Gravitational force तो आपको पता ही है. What is kinetic energy? when मतलब जो भी अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है which is moving, okay, that is known as a kinetic energy. So students, first let us move on. See here some of the images have been shown. So let us study that images. Exploitation of dome-shaped hills, mechanical weathering. Now what is exploitation? Exploitation यानी peeling. Okay, peeling. What is exploitation? Exploitation means peeling. Peeling यानी the upper layer of rock or a land that is been changed or it has been break. Okay, जो land या फिर rock, okay, change होता है या फिर crack आता है या फिर break होता है, that is known as exploitation. Okay, of dome shaped hill. Dome यानी curve shape. Okay, curve shape. Mechanical weathering. Mechanical weathering means breaking of big rocks. Okay, छोटे बड़े बड़े rocks which are break into smaller one. Okay, which are break into smaller one. So here you can see this image. This is exploitation of dome shaped hill. So this is the image. So, do you know landforms formed on the Earth's surface as a result of internal movements are called primary and secondary landforms. For example, continents, mountains, plateaus, plain, etc.
Internal movements, okay, the landform forms on the earth surface as a result of internal movement, okay, जो internal movement में जो भी landforms formed होते हैं in the surface of the earth is known as primary or a secondary landform. Example क्या है? Continents, mountains, plateaus, plain, etc. These are the example how the primary or the secondary landforms are formed. those primary और secondary landforms में क्या क्या आता है? Continents, mountains, plateaus, plains, etc. So these are the images of the continent, mountain, plateaus, plains, etc. Because of external process like weathering, erosion, transportation and deposition, the primary and secondary landform give way to the tertiary landform. For example, valleys, sand dunes, delta, U-shaped valley, etc. So, tertiary landform is formed by the external process of the weathering. Landforms are formed by the external process of weathering. ओके, एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, ओके, बाय द डिपोजिशन ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लैंडफॉर्म इज नोन एज अ टेरिटरी लैंडफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, वैलीज, sand dunes, delta, U-shaped valleys, etc. So these are the some of the images of valleys, sand dunes, delta and U-shaped valleys. See the given pictures, observe the physical appearance of the rocks in the each picture. You can see that the rocks are broken, fractured and have holes in them. In a picture, you can also see that the statues have been deformed. Why are the rocks in such a condition? Think about them and briefly tell the reason you can think of. Discuss the reason, check with the teachers if your reasons are relevant. Okay, so in the next page there are some of the images of rocks. Okay, we are going to study them. See, in the first is oxidation, chemical weathering. Now what is oxidation? Oxidation means किसी चीज का reaction with oxygen. Okay, when the rocks get reacted with oxygen, you know कि oxygen is in air, right? So when the air or the oxygen get mixed with the rock, this oxidation is being formed. So when the what chemical weathering? Chemical weathering means when rocks या soil में जब chemicals, you know that rocks on soil में there are chemicals, right? When the chemicals के साथ जब oxygen react करता है, that is known as oxidation. Oxidation means जब sand या फिर soil के साथ जब oxygen react करता है, that is known as oxidation. So this is the chemical weathering of the rock. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है? जो ह्यूमन या एनिमल इंटरफियरेंस से होता है. ओके, जैसे कि इन दिस इमेज यू कैन सी एंट इज डिगिंग दिस सॉइल. ओके, जो ह्यूमन या फिर कोई भी एनिमल के इंटरफियरेंस से जो भी अर्थ सरफेस में होता है, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल मतलब वी द ह्यूमन और द एनिमल्स. ओके, सो दिस आर दी biological weathering. See, this is biological weathering, and even this, see, this is the plant. Okay, rocks के बीच में से जो plants नहीं आते, this is also a biological weathering. So see here, next is chemical weathering. Chemical weathering or salt weathering. Now what is salt weathering? Okay, how? Let me give you all the one example. जैसे कि जब सी शोर में, जब रॉक्स में, जब सी वाटर, as you all know कि सी वाटर has salt. Okay, जब सी वाटर रॉक्स पे थ्रो बैक करता है, ओके, उसे रॉक्स में क्या हो जाता है? सॉल्ट आ जाता है. तो उस वजह से दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज बीन फॉर्म. सो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है. ये किसी के मतलब बोलते ना, इट इज नॉट बीन फोर्स्ड और किसी के कोई करता नहीं है. इट इज नेचुरली अकर्ड.
let us see the geographical explanation. Breaking or weakening of rocks in a natural phenomenon. Breaking या weakening, okay? Rocks का break होना या उसका कमजोर होना, it's a natural, okay? It's natural. वो किसी मतलब बोलते ना कोई करता नहीं है जानबूझकर. It is called weathering. Weathering can be of 3 types. Weathering कितने types के हो सकते हैं? 3 types. What are they? Mechanical, that is physical, chemical and biological. Mechanical means what? इसमें इमेजेस में अपन ने देखा है कि एयर वाटर सॉइल का इंटरफियरेंस से जो चेंजेस होते हैं दैट इज नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग. मैकेनिकल वेदरिंग या फिर फिजिकल वेदरिंग क्या है? एयर वाटर सॉइल के इंटरफियरेंस से जो भी चेंजेस होते हैं दैट इज नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग. नाउ व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? केमिकल वेदरिंग इज व्हेन द ऑक्सीजन का इंटरफियरेंस सॉइल में होता है दैट इज नोन एज केमिकल वेदरिंग. व्हेन द ऑक्सीजन इंटरफियरेंस when the oxygen get mixed with soil is known as chemical weathering. And what is biological weathering? Biological weather means human या animals के interference से जो changes होता है that is known as biological weathering. In arid climate, arid यानी dry climate, okay? Dry climate mechanical weathering is dominant. Dominant मतलब बहुत ज्यादा, बहुत मोर पावरफुल, ओके? मतलब ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट में मैकेनिकल वेदरिंग इज डोमिनेट, मतलब मैकेनिकल वेदरिंग ज्यादा होता है. इन ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड मतलब जब क्लाइमेट की नमी होती है, ओके? नमी होती है क्लाइमेट में, रेनफॉल जब होता है तो केमिकल वेदरिंग इज वेरी इफेक्टिव, ओके? मैकेनिकल वेदरिंग कब होता है? जब ड्राई क्लाइमेट होता है. मैकेनिकल वेदरिंग जब ड्राई क्लाइमेट होता है. और जब केमिकल वेदरिंग कब होता है? जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. और बायोलॉजिकल वेदर ऑकर्स बिकॉज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, ओके? तो इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन. होप यू हैव अंडरस्टूड. मैकेनिकल ड्राई क्लाइमेट में, केमिकल ह्यूमिड रेनफॉल के क्लाइमेट में, और बायोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स के वजह से, ओके? So in the next we are going to see the mechanical, chemical and biological weathering in details.